Okay, this is chapter 3. So in this chapter, we will discuss about the national income, where it comes from and where it goes. Okay, so we will discuss how to get national income and then how the national income would be distributed among factors of production. So we will see what determine the economy's total output or income. Okay, and then we'll see how the prices of the factors of production are determined. So we'll see how the price of labor is determined in the labor market and how price of capital is determined in the capital market. So we'll discuss labor market equilibrium, we will discuss capital market equilibrium, okay? And then we will also see how income is distributed. And then what determines the demand for goods and services, okay, and how equilibrium in the goods market is achieved. So we will also discuss the goods market equilibrium and determination of price. So this is the model, okay, and it's a closed economy model. So when we say it's a closed economy model, so it means there are no export, no import, there is no external sector, okay, and it's a market clearing model. When we say it's a market clearing model, so this means market will clear whenever there is a disequilibrium in the market. So there will be a price adjustment, okay, in this case. So then we have the supply side. We have supply of, factors. We have demand for factors, and then we will have the price of factor. So the supply of factor is labor, and the second factor is capital. So we have supply of labor, we have demand for labor, and then the price of labor would be determined in the labor market, which is a factor market. Same, we have second factor, which is capital. So we have supply of capital, we have demand for capital, and the price of capital would be determined in capital market, which is a factor market. Okay. And then from the supply side, we will discuss how output is determined, okay, through the factors of production. And then we will also discuss the demand side. We will discuss the consumption, investment, and government expenditure, which are the determinants of the output from the demand side. Okay, and then we will also discuss the equilibrium. We will discuss the goods market equilibrium and the loanable funds market equilibrium. So we will discuss the demand for loanable fund, and we will discuss the supply of loanable fund, and then we will combine both the demand for loanable fund and supply of loanable fund to discuss the loanable fund market equilibrium. So factors of production, we will focus only two factors of production, labor and capital. Capital is the tools, machines, and structures that are used in production. And last time we discussed the capital is the stock. Okay. And then we have labor, which is the physical and mental efforts of worker. Okay. And so this means capital and labor, they are used to produce output through production function. Okay. So when we say production function, so this means we say that output is a function of capital and labor. So this is a production function. That output is a function of, this is output, Y is output, is a function of capital and labor. So capital input and labor input will determine the output. Okay, and there is some technology. So this shows
how much output Y the economy can produce from K units of capital and L units of labor. So this is the production function in general form. Okay. And this will reflect the economy's level of technology. Okay. Now, then we have a concept of returns to scale. Okay. We have three types of returns to scale. Okay. We have constant returns to scale, we have increasing returns to scale, and we have decreasing returns to scale. Now, for constant return to scale, if we increase all input by some proportion and this output also increases by that proportion, then we will say there exists a constant return to scale. And if we increase all input by some proportion and output increases by more than that proportion, then we will say there exists increasing returns to scale. And if we increase all input by some proportion and output increases by less than that proportion, then we will say there exists decreasing returns to scale. So we have three types of returns to scale: constant returns to scale, increasing returns to scale, and decreasing return to scale. Now, to understand this, suppose this K2 equals Z K1 and L2 equals Z L1. Now, if Z equals 1.25, then this means all inputs are increased by 25%. Okay, 1.25 here, 1.25 here. So then the question is, if all inputs are increased by 25%, what is the increase in output? If output also increases by 25%, then we say there exists constant returns to scale. Okay. And if all inputs, meaning capital and labor, are increased by 25% and output increases by more than 25%, then we will say there exists increasing returns to scale. And for example, output increases by 30% or 40%, like this. Okay. Now, if all inputs increases by 25% and output increases by less than 25%, then we say there is decreasing returns to scale. For example, if we increase capital and labor by 25%, but output increases by 20% or 15% or 10%. So output is increasing, but less than the increase in all input. So in that case, we have decreasing returns to scale. Okay, I hope you got this point. Now let's discuss some examples. Anyone in the lobby? Okay. Now this is example 1, where output is a function of capital and labor, but this is the production function, that is the square root of capital and labor product. Then the question is, what would be the returns to scale? What do you think? What would be the returns to scale? Constant return to scale, increasing return to scale, or decreasing return to scale? Yes, any answer? कोई आंसर है? Can you hear me? Yes, sir. Yes. Is there any answer? If in this production function, if we increase K by Z, okay, L also by Z, then what would be the situation? Okay, you see here we are increasing all input by some factor Z. Okay,
So, okay, I will show you. Okay, this is the production function. If we increase K by Z, L by Z, so what do you think? We have output will increase by Z or output will increase by some more than Z or less than Z? Yes. Any idea? No idea? Okay, let me show you here. This is, we are increasing, okay? I increase this K by ZK, okay? And L by ZL, okay? Now, this is the output, no? Y equals FKL, this is the output. Then the question is, by how much this output will increase? So I increase K by ZK and L by ZL. So here you can see we have Z here, Z here. So they are multiplying. So what will happen? Z into Z, it will become Z square. Okay, it will become Z square. Now we can separate Z square and square root of K into L. Now square is here, square root is here. Square root mean 1 upon 2. 1 upon 2 is multiplied by 2. So then the power will become 1. So The square root will get cancelled. yes, this will get cancelled. That's why we have Z. So this means this output increased by Z. So in this case, what type of returns we have? Constant return to scale, increasing return to scale, or decreasing return to scale? I think We it's increase. constant kind of scale. Yes. We increase all input by Z and output also increase by Z. So then what types of return to scale we have? Sir, constant. Constant returns to scale. Constant. Yes, constant returns to scale. Okay. So in this case, we have constant returns to scale. Now let's have another example. What about this? Just check. If we increase K and L by Z, so this output will increase by what? And what would be the returns to scale? Constant. In this case, what would be the answer? Constant return to scale, increasing return to scale, or decreasing return to scale? Any idea? No idea? Okay, I will show you. Increasing. You are saying increasing return to scale. Yes. Any other answer? Any other answer? You said increasing return to scale. Okay. सर कांस्टेंट रहेगा Constant रहेगा. अच्छा. चलें. One answer is constant return to scale. Other answer is increasing return to scale. Any answer in favor of decreasing returns to scale? No one? Okay. Now let's check. This is the function, same function. This is the function. We have this function. Now we have to increase K and L by Z. So I increase this. So I made it ZK and ZL. Okay. Now then I have to separate square root of Z, square root of K, then square root of Z, square root of L. What is common? What is common here? Z is common. Square root of Z. Square root of Z, no? Square root Square of Z root is of Z. the square root of Z is common. So now you can see that this is same as this. So this means
when we सर increase जेड से जेड पर जो अंडर रूट है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल नहीं होगा? z is a number, no? Square root. Z is any number, no? It can be 16, it यस can be सर 20, 10, whatever number. Okay. इसके ऊपर स्क्वायर होगा तब वो कैंसिल आउट हो जाएगा ना. Now, तो जेड स्क्वायर नहीं होगा why is z जब square? Because here the common is square root, not z square. ओके ओके Last ओके time आई it was multiplied, no? यस In सर this आई case, अंडरस्टैंड नाउ in this case, it was multiplied z into z. बेस सेम हो तो पावर यस ऐड हो जाती है ना. यहाँ इसकी पावर 1 है, इसकी सर पावर 1 है, तो 1 + 1 2 हो गया, इसलिए ये स्क्वायर रूट हो गया. इससे ये कैंसिल आउट हो गया. यहाँ पे तो स्क्वायर रूट है ना. सो नाउ, so this means when we increase output, when we increase all input by z, output will increase by square root of z. So this means if I increase capital by 16, if z is 16, labor by 16, output will increase by what percentage? If capital increase by 16%, labor is increased by 16%, output will increase by square root of 16 is what? Yes? 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4. 4. 4, So sir. this means we are increasing input, all inputs by 16%, but output will increase by 4% in this 4%. type of production function. So what type of scale we have? Increasing returns to scale, decreasing return to scale, or constant return to scale? Decreasing return to scale. So Yes, it means we decreasing have, return on scale, sir. Decreasing, sir. so we have decreasing returns to scale. ना? देखा आपने? Okay. So before here we have, in this case we have increase constant return to scale. Okay, because it's the same. But here we have decreasing returns to scale, because if z is 16%, so output will not increase by 16%. Output will increase by square root of 16. So square root of 16 is 4%. That's why we have decreasing return to scale. So it means if we increase all inputs by 16%, output is increasing by 4% in this production function. Now one more example. What about this? Whether we have constant return to scale, increasing return to scale, or decreasing return to scale. In this case, ये तो आसान है ना? Same procedure you have to follow and answer. Sir, increase. Increasing return to scale. Yes. Any other answer? सर इंक्रीज होगा सर. Increasing return to scale. Yes. Now let's check. This is the production function. So we will increase all inputs by z. So we have z k whole square and z l whole square. So then we have z square and k square and z square l square. Z square would be common. So we have z square. So in this case, this means if suppose z is 4%, so output will increase by what percentage? 16%. Okay, so if z is 4, if we increase all input by 4%, output will increase the square root of 4. Square root of 4 is 16. If we increase all input by 2%, then output will increase by 4%. So in this case, output is increasing at a greater proportion. So we have increasing returns to scale. So I think this is clear. Clear है सबको?
let me take your test, then I will know whether it's clear or not. Now you have to try, okay? So determine whether we have constant, decreasing or increasing returns to scale for each of these following production function. A or B? बताएं. Now you have to solve it and give me the answer for A. A जो है वो increasing return to scale है, decreasing है या constant है, same. You have to try for B. Yes. And write down your answer. Yes, any answer for A? किसी ने सॉल्व किया? A का क्या आंसर? You have to follow same procedure, no? As we did here. Give increment for Z and then you see what will happen to this. सर यहाँ पे सिर्फ k पर स्क्वायर है, l पर नहीं है, तो ठीक है. इंक्रीमेंट तो आप दोनों को देंगे ना Z का. तो फर्स्ट केस is what? Constant returns to scale, decreasing returns to scale or increasing return to scale? Yes. The simple है, you have to make increment of Z to K and Z to L and then you have to see what will happen. Any answer? Right here. You have to make increment for Z. So यहाँ पे ZK whole square and here only Z. So then what will happen to this? It will become Z square and K square. You see? Z square and K square. Now we have Z square here, Z here. Okay. Then we are left with Z because here Z raised to power 2. When we take this denominator Z into numerator, so then will become Z raised to power -1. यानी इसके ऊपर पावर -1 है. जब हम इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे इसकी पावर हो जाएगी Z -1. तो Z -1 और Z +2, then we have Z raised to power 1 जो कि हम लिखते नहीं हैं. So then what happened to output? Output increased by Z. K square over L is same. No? So what is the case here now? क्या केस है इसमें? We have increased all inputs सर by z स्क्वायर का जो नीचे z है उसको डिवाइड कर दिया तो z खत्म, सिर्फ z आएगा. Z आएगा ना? जी बिल्कुल.
तो अब मुझे बताएं कि ये किस किस्म का रिटर्न्स टू स्केल है। सर ये हमने कैसे अंदाजा लगाएं? कैपिटल और लेबर को जेड से कांस्टेंट इंक्रीज किया, कांस्टेंट है आउटपुट भी जेड से बढ़ा ना, ये तो सेम है ना। दिस इज कांस्टेंट सर, कांस्टेंट ये रिटर्न्स टू कांस्टेंट है। स्केल। ठीक, व्हाट अबाउट दिस सेकंड वन? इसके बारे में बताएं। ये तो बहुत ही सिंपल है। यस, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल Increasing, sir. इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? Increasing. इंक्रीजिंग, अच्छा। और कोई आंसर? एनी अदर आंसर? डिक्रीजिंग सर, इंक्रीजिंग, अच्छा। और एनी अदर आंसर? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग, ओके। एनी अदर जी आंसर? सर। नहीं सर, इंक्रीज होगा सर। अच्छा, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ओके। एनी अदर आंसर? So you are saying increasing. Okay, let's check. You are not using your logic. Okay, just guess. आप guess कर रहे हैं ना। देखिए ये है, हमें क्या करना है, K और L को इंक्रीमेंट देना है Z का, ठीक है। So then it will become ZK and ZL. What is common? इनमें कॉमन क्या है? Z, sir. Z कॉमन, Z. Z Z कॉमन, कॉमन। That is common. Z जब कॉमन ले लेंगे तो K और L ये। So if we increase all input by Z, output is increasing by what? जेड Z। ये तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल हुआ ना। कांस्टेंट आपने है, कैसे कह दिया, कांस्टेंट है। आपने कैसे कह दिया इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल? सो यू हैव नॉट यूज्ड योर सर मैंने लॉजिक। इसलिए कहा था सर, हाँ Z हाँ, दो दफा वो है ना, K और दो दफा L का ये दो दफा, मल्टीप्लाई इस नहीं हो वजह रहा से कहा ना। था अगर सर। ये मल्टीप्लाई हो रहा होता तो फिर जेड स्क्वायर हो जाता। तो फिर यहाँ तो प्लस हो रहा है ना, ये प्लस हो रहा है तो फिर जेड स्क्वायर तो नहीं होगा ना, जेड कॉमन हो जाएगा। ठीक, इस वजह से कहा था सर। okay. Then we have the assumptions of the model. So now you know how to know whether the production function exhibit constant return to scale or increasing returns to scale or decreasing returns to scale. Then we have assumptions of the model. We are assuming that technology is fixed, okay, and then we are also assuming that the economy's supply of capital and labor are fixed. So that's why we say capital is fixed, K bar, labor is fixed, L bar. Okay, so then how to determine output? So output is determined by the fixed factor supply and the fixed state of technology. So we have fixed output. This is the fixed output. Capital is fixed, labor is fixed, technology is fixed. So we have this output. Then the question is about distribution of national income. So this is your national income, no? This is your output, which is your income in the economy. Then how this national income would be distributed among labor and capital owners. So this is determined by factor prices. Okay, so and the prices per unit that firm pays for the factors of production. Okay, so wage is the price of labor. Okay, if you work, you will get wages. Okay, and rental rate is the price of capital. Okay, so capital owners, they will get rental rate, which is the price of capital. So we have price of labor, wage, we have price of capital, rental rate. Okay, then we will use these notations. W is the nominal wage. Okay, and if we divide this by price, then we will get real wage. Okay, this is the real wage. Okay, nominal wage divided by price is the real wage, and this is measured in units of output. Okay,
Okay, so if you are getting 100 rupees per day, and so this 100 rupees is your nominal wage, then we have to see what is the price level. So if the price level is 20, if the price of output is 20, so how many units of output you will get? If you are getting 100 rupees, that 100 rupees is your nominal wage. And if the price of output is 20 rupees, then what will be your real wage? 100 divided by 20, this is 5. And this 5 is the units of output. It means you are getting 5 units of output. So real wage is measured in terms of the units of output. So that's why, if someone says your nominal wage double, okay, so for economists, we immediately ask what happened to the prices, because if your nominal wage double and prices also double, so this means there is no change in the real wage. So you would be getting the same amount of output. ठीक है ना, अगर कोई ये कह दे कि आपकी सैलरी डबल हो गई है, तो सबसे पहले क्वेश्चन तो ये होगा ना, आप पूछेंगे कि प्राइसेस को क्या हुआ। अगर प्राइसेस भी डबल हो गई हैं, आपको 10,000 मिल रहे हैं और 20,000 मिलने लग जाए, लेकिन प्राइसेस भी डबल हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि आपको उतने ही नंबर ऑफ यूनिट्स मिलेंगे जो कि पहले मिल रहे थे, तो फिर आपकी रियल वेज तो चेंज नहीं हुई ना। तो दैट्स व्हाई we look to the real wage. What is happening to the real wage? If prices are increasing more than increase in nominal wage, so it means there is a decrease in real wage. So then people would be getting less number of units of output. That's why अगर देखें, अगर जो है इन्फ्लेशन रेट जो है वो 15% हो, और गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी 10% बढ़ा दें, तो एक्चुअली जो है वो रियल वेज तो कम हो गई ना गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, एंड दे वुड बी गेटिंग लेस यूनिट्स ऑफ आउटपुट. And if the inflation rate is 15% and government also increases salary by 15%, so it means there is no change in the real wage and they are getting the same units of output. But if inflation rate is suppose 10% and government increases nominal wage by 15%, so then the employees will get higher units of output. Okay. So real wage matters. Then this is the nominal rental rate, okay, and this is the price of output. So we have real rental rate. If I want to calculate, so I will divide nominal rental rate with the price of output. So I will get real rental rate. Then the question is how factor prices are determined. So factor prices are determined in the factor markets. Okay, we have labor market, we have capital market. So wage rate would be determined in the labor market, rental rate would be determined in the capital market. We will see how that is determined. Okay, so factors of prices are determined by supply and demand in factor market. Okay, so we have demand for labor and supply of labor, we have demand for capital and supply of capital. So this will interact in the respective factor market and will determine the price of respective factor. So in our case, supply of each factor is fixed.
we have assumed that the labor supply is fixed and capital supply is fixed. Then the question is, what about the demand? What about the demand for labor? What about demand for capital? Okay. What about demand? Demand for labor, look at. We are assuming that the markets are competitive and each firm takes nominal wage, rental rate, and prices as given. So you have studied perfect competition in your microeconomics course. So under perfect competition, each firm is a price taker. So they take price as given. So because wage is the price of labor, rental rate is the price of capital, this P is the price of output. So they takes these prices as given. The basic idea is the firm hires each unit of labor if the cost does not exceed the benefit. You see, if you are a firm and the objective of firm is to maximize profit, so then if you are going to hire labor, okay, you will not hire that labor whose cost is more than the benefit. And what is the cost of hiring labor? Cost of hiring labor is the wages, okay, real wage. This is the cost, no? Because you have to, when you hire a worker, you have to pay real wage. Then benefit is the marginal product of labor. Do you remember? You have studied marginal product of labor in your microeconomics course. What is marginal product of labor? क्या है? किसी को याद है marginal product of labor? Marginal mean one unit. No? Product is the output of labor. So one unit of extra labor. unit. Yes. Extra output which is produced by one additional unit of labor. That is the marginal product of that labor. Okay. So this is the definition of marginal product of labor, the extra output the firm can produce using an additional unit of labor holding other inputs fixed. So in our case, other input is capital. So with fixed capital, whatever extra output is produced by one additional unit of labor would be the marginal product of that unit of labor. So this is marginal product of labor. We have, this is the output production function. We add one labor here, and this is the original output. This is the output which is with one additional labor. So then that would be the marginal product of labor. This is the marginal product of labor. Now this is the numerical example to compute and graph the marginal product of labor. So we have labor here, okay, and this is the output, which is the total product, and then we have to compute marginal product. What would be the marginal product of first labor? क्या आंसर आएगा यहाँ पे? 10, sir. 10. Okay. So we also calculate marginal product of labor change in output divided by change in labor. So change in output is 10 minus 0 divided by 1 minus 0. So we have 10 here. What would be the marginal product of second labor? यहाँ पे 9, change sir. in yes 9. Change in output divided by change in labor. 19 minus 10 divided by 2 minus 1. So here we have 9. Yes. Third का खुद लिखा हुआ है 8. What would be the marginal product of fourth labor? 7. 7. Okay, 36.
4 minus 27 और फिर 4 minus 3 तो 7. इसके बाद what would be the minor product of fifth labor? 6. 6. 6. Then 5. then 4. 4. then 3. 3. then 2. then 1. 1. कैसे आया 1? Oh, How you got 1? Sir, minus 1. 54 minus 55. Minus 1. -1 है? अभी तो 1 कहा था आपने, +1 ना? Yes, कैसे आया +1? How you got the marginal Sir, product the of number of 10? units produced by Sir, the number of units produced by the number 10th person is he's Yes. just producing an extra unit, one extra unit. So you got it 55 minus 54. 54 divided by 10 minus 9. Okay, delta y over delta L is the formula for marginal product of labor. Okay, so you got the answer. So we determine the marginal product at each level. Then if we want to graph this production function, okay, this production function with this labor को horizontal axis पे ले लें, capital और इसको output को vertical axis पे ले लें. So what would be the shape of graph of the production function? It will be increasing slope or decreasing slope or constant slope. Yes. What would be the shape of the graph for the production function? Labor और y के साथ relationship कैसा है? Positive relationship है, negative relationship है, क्या है? Labor और output में. This is output. Yes. Positive है सर. Positive है ना? देखें, if we are increasing labor, output is also increasing. Yes sir. But at a decreasing rate ना. Increase तो हो रहा है लेकिन decreasing rate से. So we have positively slope ना. अगर हम अभी आपने कहा था ना यहाँ पे 10, 9 ये सब इसको अगर प्लॉट करें, ठीक है, पहले तो इसका प्रोडक्शन फंक्शन है ना, वी हैव लेबर आउटपुट दिस इज and this is the marginal product of labor. Okay, because if you look at here, this is production function, this is labor with output. Why? Let me show you here. ये आंसर है ना हमारे. Yes. If I want to plot this marginal product of labor with labor, so you the relationship कैसा है इसमें? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? लेबर और एमपीएल का. Relationship between labor and marginal product of labor is positive or negative? Negative. Negative. Yes, sir. So we are increasing labor, but marginal product of capital is decreasing. So this is increasing, this is decreasing. So that's why we have this type of graph. This is the graph. So production function, okay, total product curve. This is called total product curve. This is called marginal product curve. Now, because you calculated marginal product of labor by taking change in Y or change in L.
डेल्टा वाई और डेल्टा एल, ठीक है। तो दिस इज change in y, this is change in y, this is change in l, and this equals the slope ना। स्लोप का फार्मूला भी यही होता है ना, अगर यहाँ पे x हो, यहाँ पे y है, डेल्टा y और डेल्टा x जो है वो स्लोप होता है किसी भी कर्व का। तो यहाँ पे x की जगह l है, तो डेल्टा y और डेल्टा l, so we can say that the marginal product of labor is the slope of production function. Okay? So slope of production function equals marginal product of labor. Or what is happening? Slope is decreasing. जैसे जैसे हम यहाँ जा रहे हैं, slope is decreasing. You see, this is decreasing. This is decreasing. So that's why we have diminishing marginal returns. As a factor input is increased, its marginal product falls. Other things equal. That's why, as we are hiring more and more worker, here as we are hiring more and more worker, as we are hiring more and more worker, marginal product is decreasing. आप देख रहे हैं ये काम हो रहा है। एक स्टेज ऐसा आएगा कि हम अगर सपोज 11th लेबर को हायर करें, मे बी उसके आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा, तो 55 ही रहे। So then in that case, marginal product of 11th worker would be what? 0. 0. और अगर सपोज हम 12th वर्कर को हायर करें और बजाय इसके कि वो सेम रहे 55 से वो 53 आ जाए वो आउटपुट, देन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ 12th वर्कर Negative. -2 के Minus, नेगेटिव हो जाए। minus. सो दैट्स वाई ना कि हम अगर एक रूम है वहाँ पे हम चेयर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो पहले आपने जो है ना एक वर्कर को हायर किया, आपके पास मशीनरी थी और उस वर्कर ने वो सारे काम करने थे, तो वो लकड़ी भी काट रहा है और उसको जो है ना वो चेयर को पॉलिश भी कर रहा है, बिल्कुल फाइनल स्टेज में ला रहा है। लेकिन आपने फिर एक और लेबर हायर किया, तो जो है पहले जो है वो माय प्रोडक्ट बढ़ेगी क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर होगा, ठीक है, वर्क डिवाइड हो जाएगा, तो फिर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। लेकिन जैसे जैसे आप लेबर हायर करेंगे तो वो प्लेस जो है वो कंजेस्टेड होता जाएगा, and then the marginal product of each additional worker वो डिक्रीजेस। और एक स्टेज ऐसा आएगा कि वो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा, तो देन इफ़ यू हायर वन मोर वर्कर मे बी देयर विल बी नो कंट्रीब्यूशन इन आउटपुट, तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ दैट वर्कर वुड बी 0। और फिर इफ़ यू फर्दर हायर वन मोर वर्कर देन दैट वर्कर मे डिस्टर्ब अदर वर्कर्स, तो फिर जो है वो टोटल आउटपुट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, एंड देन वी से दैट marginal product of that additional worker is negative. Now suppose if so that is the ये जो हमने अभी डिस्कस किया diminishing, as we hire more and more worker their marginal product decreases. This is the diminishing marginal returns as labor increases while capital is fixed. So and then there are fewer machines per workers, and then it will decrease the worker productivity. So marginal product of labor decreases. Now अगर रियल वेज जो है वो 6 है, रियल वेज जो है वो आउटपुट है, ये भी आउटपुट है ना, ये भी आउटपुट है, ये भी आउटपुट है। ये सपोज चेयर है ना, फर्स्ट वर्कर आ रहा है उसने 10 चेयर प्रोड्यूस किए, सेकंड वर्कर ने 9 चेयर प्रोड्यूस की, थर्ड। अब आप जो उसको, ये आपका बेनिफिट है, दिस इज योर बेनिफिट ना, नंबर ऑफ चेयर व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय ईच वर्कर इज द बेनिफिट बाय हायरिंग दैट वर्कर। कॉस्ट क्या है? यू हैव टू पे रियल वेज, एंड रियल वेज इज व्हाट? नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आउटपुट। अब आप जो है उसको जो है अगर प्राइस ऑफ चेयर जो है वो 10 है,
और आप उसको 60 रुपीज़ दे रहे हैं, तो वैसे तो आप उसको नॉमिनल वेज 60 दे रहे हैं, लेकिन रियल वेज क्या होगा? 60 डिवाइडेड बाय 10 इज 6। तो फिर इसका मतलब ये है कि वो 6 चेयर ले सकता है ना, तो आप उसको इक्वल टू 6 चेयर जो है वेज दे रहे हैं, रियल वेज, एंड दैट इज योर कॉस्ट। यू गॉट माय पॉइंट? कि रियल टर्म में देखा जाए, अगर आप उसको 60 रुपीज़ दे रहे हैं और प्राइस ऑफ चेयर जो है वो 10 है, so this means you are giving him 6 chair or 60 rupees. Of course. Okay, now Yes, sir. this is your cost, this is your benefit. मुझे बताएं, अगर आपकी ये कॉस्ट होगी तो आप, if you are manager of this firm which is producing chair, now ये डेटा आपके पास अवेलेबल है, ये टेबल, ये भी आपको पता है, एंड नाउ यू आर मैनेजर ऑफ दिस फर्म, क्या आप इस लेबर को हायर करेंगे? यस सर, फर्स्ट को कर लेंगे। क्यों करेंगे? रीजन? सर उसकी मार्जिनल प्रोडक्ट जो है ना वो ज्यादा है उसकी वेज से। ये आपको 10 चेयर प्रोड्यूस करके दे रहे हैं ना, ये बिल्कुल आपका सर। बेनिफिट है, जबकि आपकी कॉस्ट है 6 चेयर। तो आप जब ये 10 चेयर प्रोड्यूस कर रहा है, 6 चेयर आपने इसको दे दिए, 4 चेयर जो है वो आपका प्रॉफिट, एडिशनल है सर, बिल्कुल। वो बेनिफिट है ना, नेट बेनिफिट यही हुआ ना। इसी तरह जो सेकंड वर्कर है, आप इसको हायर करेंगे? यस सर। यस। थर्ड वर्कर को हायर करेंगे? यस सर। यस। थर्ड को भी, फोर्थ को? फोर्थ को भी कर लेंगे सर। फिफ्थ को? फिफ्थ को नहीं करेंगे सर, No. ब्रेक इवन पे आ जाओ। सर फिफ्थ में ब्रेक इवन पे सर। हर्ज क्या है इसको हायर ना करना? फिफ्थ को भी करेंगे सर, क्योंकि वो ठीक है ना, ये आपको क्राइटेरिया को जितना मीट कर रहा है। जितना उसकी फिक्स है। कॉस्ट है उतना बेनिफिट है, इसको हायर करने में आपको नुकसान तो नहीं है ना। तो इट मीन अ फर्म विल हायर वर्कर अप टू द पॉइंट वेयर, किस पॉइंट तक आप हायर करेंगे? ये 7 को आप हायर करेंगे या 6 को हायर करेंगे? 6 वर्कर को हायर नहीं सर, नहीं, क्यों नहीं करेंगे? No, जी sir. सर, कर क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहा। नहीं नहीं, मैं वो वजह बताएं ना, वो लॉजिकल रीजन बताएं ना। Sir, वो वहां से 5 chair प्रोडक्शन दे कम रहा हो है। जाएगी सर। 6 रिक्वायर्ड है ना सर, जो 6 6 रिक्वायर्ड वर्कर है, है। नहीं 6 वर्कर जो है उसका बेनिफिट कितना चेयर है? 5. सर कोई 5 बेनिफिट चेयर है, लेकिन उसकी कॉस्ट क्या है? सिक्स उसकी रुपीज, कॉस्ट क्या है? 6 चेयर, 6 चेयर। 6 तो इसका चेयर। मतलब है एक चेयर आपने जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वहां से देना होगा ना, तो फिर आपकी बिल्कुल। प्रॉफिट मैक्सिमाइज तो नहीं होगी ना, प्रॉफिट तो होगा, लेकिन यहाँ से जितना भी डिफरेंस आ रहा है वो प्रॉफिट है। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज होना। इस वर्कर को हायर करने से आपकी जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज नहीं होगी, क्योंकि आपने यहाँ से एक और उसको देना होगा, और इस वर्कर की जो कॉस्ट है दैट इज मोर देन द बेनिफिट। आप उसको क्यों हायर करें जब उसकी कॉस्ट जो है ज़्यादा उसके बेनिफिट से? तो इसका मतलब ये है कि व्हाट अबाउट 7th, इसको हायर करेंगे? No, sir. नो, तो 7th, नो 8, सर। 9, 10 इनको हायर नहीं करेंगे ना, क्योंकि Yes, sir. इनकी जो कॉस्ट है दैट इज मोर देन द बेनिफिट। तो आपने देखा होगा कि लोअर प्रोडक्टिविटी के वर्कर हो गए ना, इसलिए। अब आप देखें, इफ लेबर इज 3, इस वक्त आपकी फर्म में 3 लेबर हैं, आपने ज्वाइन किया एज ए मैनेजर, ये सिचुएशन है। तो एचआर मैनेजर के तौर पे आपका क्या डिसीजन होगा? यू विल हायर मोर वर्कर और लेस वर्कर? इस वक्त फर्म में 3 है, ये आपके पास चार्ट है, ये आपके पास वेजेस आप दे रहे हैं। यू विल हायर मोर वर्कर और लेस वर्कर? सर मोर वर्कर्स। यू विल हायर मोर मोर सर। वर्कर। 3 मोर वर्कर, 3 मोर ठीक है, वर्कर। 3 मोर वर्कर आप हायर करेंगे। लेकिन अगर ये सिचुएशन हो
आपने ये फर्म ज्वाइन किया एज ए मैनेजर और आपको पता चला कि उसके 7 एम्प्लॉई काम कर रहे हैं, फिर आप क्या एक्शन लेंगे? सर दो उसमें से दो को वो फायर कर देंगे। हाँ, 2 वर्कर को इमीडिएटली आप फायर कर देंगे, क्योंकि आप जो है ये 7th और 6th वर्कर को आप फायर कर देंगे। आपने देखा कि जब कोई जो है इदारा गवर्नमेंट के पास होता है तो गवर्नमेंट जो है उसका ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। उसके पास वहाँ पे वो उसको जॉब दे रहे हैं, उसके वर्कर ज़्यादा होते हैं और हमें पता है कि गवर्नमेंट के पास जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी प्रोडक्टिविटी भी कम है ना। जैसे ही वो प्राइवेट सेक्टर के पास चला जाता है तो सबसे पहला एक्शन जो है वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट पे होता है कि वो जितने भी वर्कर जिनकी प्रोडक्टिविटी कम होती है या जिनकी कॉस्ट ऑफ हायरिंग ज़्यादा है और उनका बेनिफिट कम है, इमीडिएटली दे आर फायर। ओके, सो इसमें ये है कि अगर रियल वेजेस कम हो जाए, सपोज ये रियल वेजेस इस वक्त 6 है मार्केट में और ये 4 हो जाए, तो 6 की वजह से इफ़ द रियल वेज इज 6 तो आप जो है वो 5 वर्कर हायर कर रहे थे। जब ये 4 हो जाए तो फिर आप 6 और 7th वर्कर को भी हायर कर लेंगे, तो फिर आप 7 वर्कर को हायर, तो दिस मीन्स के रियल वेज डिक्रीजेस, व्हाट विल हैपन, लेबर डिमांड, ये लेबर डिमांड है ना, आपकी लेबर डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन अगर रियल वेज बढ़ जाए 6 से ये 8 हो जाए, अगर ये रियल वेज 8 हो जाए तो फिर आप कितने वर्कर हायर करेंगे? सर वन मोर इस- आएगा। नहीं, रियल वेज अगर 8 हो जाए, 6 है तो आप 5 वर्कर हायर कर रहे हैं। अगर ये 8 हो जाए रियल वेज तो आप कितने वर्कर हायर करेंगे? 53। 3 वर्कर 3 हायर सर। करेंगे। यस इसका सर। मतलब ये कि रियल वेज जब बढ़ गया तो आपकी लेबर डिमांड पे क्या असर पड़ा, कम हो गई या बढ़ गई? कम हो गए कम सर। हो गई। हाँ, इसी तरह अगर रियल वेज कम हो जाए तो आपकी लेबर डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। तो लेट्स प्लॉट, सो ये जो जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है, दिस इज बेसिकली शोइंग द डिमांड फॉर लेबर। ओके, तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कर्व जो है दैट इज बेसिकली द डिमांड फॉर लेबर कर्व। ये अगर यूनिट्स ऑफ लेबर है, यूनिट्स ऑफ आउटपुट है, तो ये लेबर डिमांड कर्व है। रियल वेज अगर इतना ये है तो देखिए नेगेटिव रिलेशनशिप है ना, रियल वेज बढ़ जाएगा तो लेबर डिमांड कम हो जाएगी, रियल वेज कम हो जाएगा, लेबर डिमांड बढ़ जाएगी। दैट्स फाइन। सो डिमांड फॉर लेबर कर्व इज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कर्व। सप्लाई ऑफ लेबर कैसे है? सप्लाई ऑफ लेबर हमने क्या अज्यूम किया था, डू यू रिमेम्बर? सप्लाई ऑफ लेबर इज फिक्स्ड ना, फिक्स हमने थे अभी मेरे ख्याल किया सर। यस सर। सप्लाई ऑफ लेबर इज फिक्स्ड, आई विल शो यू। ये देखिए सप्लाई ऑफ लेबर इज फिक्स्ड ना, दिस इज, तो लेबर सप्लाई अगर फिक्स है तो इसका ग्राफ कैसे होगा? वर्टिकल होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, नेगेटिवली स्लोप होगा, पॉजिटिवली स्लोप होगा अगर हम रियल वेज को ले लें या आउटपुट को ले लें वर्टिकल एक्सिस पे। तो जब हम आउटपुट ले रहे हैं दिस इज आल्सो रियल वेज ना, एक चीज़ आपको क्लियर हो जाए, दिस इज आउटपुट, ये जो यूनिट्स ऑफ आउटपुट है दिस इज बेसिकली रियल वेज, अभी हमने डिस्कस किया ना, 6 आपको मिल रहे हैं रियल वेज, 6 चेयर मिल रहे हैं, दिस इज 6 यूनिट्स ऑफ आउटपुट इज बेसिकली योर रियल वेज। तो डिमांड फॉर जो लेबर कर्व है इज बेसिकली द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कर्व। सप्लाई ऑफ लेबर अगर मुझे यहाँ प्लॉट करना है, सप्लाई ऑफ लेबर
कर्व जो है वो पॉजिटिवली स्लोप होगा, नेगेटिवली स्लोप होगा, वर्टिकल लाइन होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, क्या होगा? यस, एनी आंसर? अगर कोई चीज फिक्स हो, लेबर सप्लाई फिक्स हो, तो उसका ग्राफ कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल होगा सर। हॉरिजॉन्टल होगा। यहाँ यूं होगा। तो यूं अगर हॉरिजॉन्टल होगा तो फिक्स तो नहीं रहा ना, फिर तो चेंज हो रहा है ना। अगर मैं इसको यूं प्लॉट करूं तो फिर तो फिक्स तो नहीं रहा ना लेबर, तो इसका मतलब है चेंज हो रहा है। ये ना, लेबर तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर है। अलोंग द वाई कर्व होगा जी। यस, लेबर सप्लाई जो है फिर वो वर्टिकल होगा ना, ठीक है ना, जी। इस तरह। ये है ना लेबर सप्लाई, और इसका मतलब है लेबर इज फिक्स। दिस इज सप्लाई ऑफ लेबर, दिस इज द डिमांड फॉर लेबर। तो यहाँ पे डिमांड फॉर लेबर इक्वल सप्लाई ऑफ लेबर, so this is the equilibrium real wage। तो ये जो है आपका equilibrium real wage। So this means the equilibrium real wage is determined in the labor market, ये labor market है ना, by the interaction of the demand for labor and supply of labor। अब whenever there is disequilibrium, अगर यहाँ पे हो रियल वेज, यहाँ पे हो, तो क्या सिचुएशन होगी मार्केट में? यस, मैं ये कह रहा हूँ अगर यहाँ पे हो, ये होगी है रियल वेज। अब क्या सिचुएशन है मार्केट में? दिस इज डिमांड फॉर, सर द अमाउंट ऑफ इनकम पेड वर्सेस। इनकम की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही है ना, ये लेबर मार्केट है, ये आउटपुट मार्केट नहीं है। द रियल वेज पेड टू एम्प्लॉयज आर मोर। नहीं, इफ रियल वेज इज हेयर, what is the situation in the labor market? There is excess supply or excess demand of labor? एक्सेस सप्लाई सर। There is excess supply of labor ना, देखें ना, लेबर सप्लाई इस पेज पे यस लेबर सर। सप्लाई ये है और लेबर डिमांड ये। Whenever there is excess supply of labor, then this means real wage will adjust na, to equate the labor demand and labor supply। So this will adjust na to bring equilibrium in the, यहाँ पे equilibrium है, ये आपका equilibrium है। So what will happen, this real wage, this will move up or down to bring equilibrium in the labor market। क्या होगा? रियल वेज जो है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा अगर एक्सेस सप्लाई है लेबर मार्केट में? यस, किसी मार्केट में किसी चीज़ की एक्सेस होती है तो प्राइस जो है, बेसिकली रियल वेज इज द प्राइस ऑफ लेबर, तो बढ़ेगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी ना, डिक्रीज होगी। डिक्रीज, डिक्रीज होगी। जैसे जैसे डिक्रीज होगी आप देखें लेबर डिमांड में इजाफा हो जाएगा, और देन ये जो गैप है एक्सेस, वो यहाँ पे आके फिर वो यहाँ पे आके जो है वो इक्विलिब्रियम इज रिस्टोर। और अगर ये रियल वेज हो, अब क्या सिचुएशन है मार्केट में? इस रियल रियल वेज शॉर्टेज ऑफ लेबर। नहीं, देयर इज एक्सेस डिमांड फॉर लेबर और एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर। यस, सर एक्सेस
डिमांड ऑफ डिमांड ऑफ लेबर। एक्सेस डिमांड फॉर लेबर ना, क्योंकि यहाँ डिमांड इतनी है, सप्लाई। जब किसी चीज़ की एक्सेस डिमांड होती है तो उसकी प्राइस जो है इंक्रीज कम हो प्राइस जो है वो कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना। किसी चीज़ की एक्सेस डिमांड होती है, अगर इसमें यहाँ पे लेबर बढ़ जाएगी मार्केट सर। लेबर की एक्सेस डिमांड है तो फिर रियल वेज जो है वो बढ़ जाएगी ना, एंड अगेन इक्विलिब्रियम इज रिस्टोर हियर। So this means real wage will adjust to equate labor demand and labor supply to bring equilibrium in the labor market. And equilibrium real wage is achieved at a point where labor demand equals labor supply. And this is the labor market equilibrium. Next class में हम डिस्कस करेंगे कैपिटल मार्केट इक्विलिब्रियम।